Okay. In AC voltage, V is equal to 220 sine 2 into 10 to the power 3t volt is applied to a series LCR circuit. Current amplitude in this circuit is given L is equal to 10 millihenry, C 25 microfarad, R 100 ohm. As we know, I naught is equal to V naught by Z. Z is equal to root R square plus XL minus XC का whole square. R square plus omega L minus 1 upon omega C whole square. R is 100 का square, 2 into 10 to the power 3. L is 10 millihenry minus 2 into 10 to the power 3, 25 microfarad. Z is equal to 100 ohm. I naught is equal to V naught 220 by 100, 2.2 ampere. So answer 3. सही है. The mean free path of molecule in an ideal gas A is that A is half that of another ideal gas B. Lambda A is equal to lambda B by 2. Lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square n. 1 upon 2 root 2 pi dB square nb pi dA square Na. The diameter of the spherical molecule of gas A is twice the diameter of the molecule B. Given dA is equal to 2 dB. If number density of molecule A and B are Na and Nb respectively, then the correct option is 1 upon 4 dV square. Na is equal to 1 upon dV square Nb. Then Na is equal to Na by Nb is equal to 2 by 4. Na is equal to 1 by 2 Nb. Answer second. Cylindrical cork of uniform density float in a liquid of density rho 1. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. If the same cork floats in another liquid of density rho 2, then the similar oscillation has time period 2t. The value of rho 2 by rho 1 is. As we know,
P is equal to 2 pi root M by A rho G. In liquid, in first liquid, P is equal to 2 pi root M by A rho 1 G. In second liquid, 2T is equal to 2 pi root M upon A rho 2G. Equate 1 and 2. 2 into 2 pi M by A rho 1 G is equal to 2 pi root A rho 2G. 2 is equal to root rho 1 by rho 2. 4 is equal to rho 1 by rho 2. Rho 2 is equal to rho 2 by rho 1 is equal to 4. 1 by 4. Answer second. Consider a spring mass simple harmonic oscillator in one dimension. The mass of the particle is m kg and the spring constant is k Newton per meter. At a given instant, the extension of the spring is x meter and the speed of particle is v meter per second on the xv plane. If the graph of v as a function of x is a circle, then correct option is. As we know, velocity in SHM, omega a square minus y square, v square by omega square a square minus y square. XV plane is a circle. V square by omega square plus y square is equal to a square. Omega square a square plus y square upon a square is equal to 1. Because path is circle. So omega square by a square is equal to a square. Omega square is equal to 1. K upon m is equal to 1. K is equal to m. Answer 4. In an adiabatic expansion, the temperature of 1 mole of an ideal monatomic gas gamma is equal to 5 by 3
decrease from 60 Kelvin to 50 Kelvin. The work done by the gas in the process is, as we know, in adiabatic process, work done is N T1 minus T2 by gamma minus 1. 1, 8.3, 60 minus 50, 5 by 3 minus 1. That is equal to 83 divided by 2 by 3. 83 into 3 by 2. 249 divided by 2, 124.5 joule. Answer 1. The following table represent the part of the electromagnetic spectrum and their corresponding major application, part of electromagnetic spectrum and its application. Microwave is generally used for heating, warming the food. That is, P is second. Ultraviolet rays for purifying the water. Gamma rays for treating the cancer cells. Radio waves for AM and FM communication. Option P second, Q first, R fourth, and S third. So option 1 is correct. Answer 1. A unit positive point charge is taken slowly through an infinitely small thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r having uniformly positive charge density rho. As shown in the figure, the initial and final position of the charge are marked by A and B at distances 2r and 3r respectively from the center of the sphere. In this process, the magnitude of total work done on the point charge is rho square by n epsilon 0. The value of n is epsilon 0 is the permittivity of vacuum. As we know, in electrostatics, W is equal to VB minus VA into Q, that is 1. 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon 3R minus Q upon 2R. Six R 2 minus 3. Q upon 4 pi epsilon 0 minus 1 upon 6R. Q is equal to 4 by 3
pi r cube into rho. So W is equal to 4 by 3 pi r cube upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 6 r. That is r square by rho r square by 18 epsilon 0. As given, rho r square by 18 epsilon 0 is equal to rho r square by n epsilon 0. N is equal to 18. Answer second. A beam of light fall on a metal surface such that the photoelectrons are generated if the power of the light source starts to decrease linearly with time, then variation of the photoelectric current and magnitude of the stopping potential V with time is best represented by. In particle nature, intensity of light I is equal to n h nu by at. So decrease in intensity means number of photons decreases. So number of emitted electrons will decrease. Electron will decrease. So current will decrease linearly and no change in cutoff voltage because frequency remains same. Which is correctly shown in graph second. Answer will be 2. The bob of mass m at rest is hanging vertically from the ceiling by a massless string of length 10 meter, as shown in the figure. Point mass m
A of mass m traveling horizontally with speed 10 meter per second hits bob B elastically. The bob B rise h meter after the collision, taking the acceleration due to gravity g is equal to 10 meter per second square and neglecting the size of bob, the value of h is. Because collision is perfect elastic. Mass of colliding bodies are same. So velocity will exchange. Velocity of bob just after collision is 10 meter per second. Now, by energy conservation, half m v square is equal to m g h. H is equal to v square by 2g. 100 by 2 into 10. 5 meter. So answer is first. An ideal gas is made up of polyatomic molecules. Each of the molecule has 3 translational, 3 rotational and F number of vibrational modes. If the ratio of heat capacity Cp by Cv of the gas is 8 by 7, delta V by V, then the value of F is. Value of F is. As we know, gamma is equal to 1 plus 2 by F. 8 by 7 minus 1 is equal to 2 by F. 1 by 7 is equal to 2 by F. So F is equal to 40. F 3 translational plus 3 rotational plus F vibrational mode. So 2F is equal to 14. 2F is equal to 8 and F is equal to 4. Answer 3.
In the measurement of viscosity of liquid using terminal velocity experiment, spherical wall of same radius but having different densities are used. The variation of terminal velocity with the ratio of density of spherical ball sigma to the density of liquid rho is best represented by, as we know, terminal velocity V is equal to 2 by 9 R square sigma minus rho into G by eta, which can be written as 2 by 9 R square G by eta rho sigma by rho minus 1. All these quantities are constant. So V is equal to constant sigma by rho minus 1. This is equation of straight line. If sigma by rho is equal to 1, so V is equal to 0, which is correctly represented in graph third. So answer will be 3. In a solar system, the time period of revolution of a planet tracing a circular orbit of radius r is proportional to, according to Kepler's third law, T square proportional to r cube. So T proportional to r to the power 3 by 2. Hence, answer 4. A solid sphere A of radius r and mass m is attached to a point to a smaller solid sphere B of radius r less than r and mass m less than m. Assume that the line joining their centers lie along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about a vertical axis passing through the center of A is IA, and that of calculate at about a vertical axis passing through the center of B is IB. The difference IA minus IB is IA is equal to 2 by 5 mr square plus 2 by 5 mr square plus m r plus r का whole square. This is according to parallel axis theorem. Now IB is 2 by 5 m r square because sphere B rotate about their own axis plus 2 by 5 m r square plus m r plus r का whole square.
Now IA minus IB is equal to subtract 1 and 2 minus minus minus. So remaining is M minus M R plus R का whole square. So answer will be 4. Take mass of U-238 and thorium 234, 2He4 as a 238.050 unit, 234.043 unit and 4.003 unit respectively. The Q value of the reaction in KEB is given 1 unit is equal to 931.5 MeV per C square. Mass effect delta M. Mass of reactant minus mass of product. Mass of uranium 238 minus mass of thorium 234 plus mass of 2He4. That is 238.050 unit minus 234.043 plus 4.003. Mass effect is 238.050 minus 238.046. That is 0.004 U. As we know, delta E is equal to delta M 0.004 into 931.5 million electron volt is equal to 0.004 931.5 into 10 to the power 3 kilo electron volt 3726 keV. So answer will be 3. Consider a fixed uniformly charged insulating sphere with radius r, total charge plus q. A point charge minus q, q less than q with mass m is released from rest at a distance of 3r from the center of the charged sphere. When the point charge reaches the surface of the sphere, its speed is. According to energy conservation, this distance is 3r.
Work done on the charge by electric field is equal to change in kinetic energy. W is equal to minus Q V surface minus V P minus Q 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R minus Q upon 3R is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q Q by R 1 minus 1 by 3. That is QQ 2QQ by 3. R. This is equal to the loss of potential energy is equal to change in kinetic energy. Loss of potential, gain in kinetic. So 1 upon 4 pi epsilon 0 2QQ by 3R is equal to half m v square. V is equal to QQ by 3 pi epsilon 0 m r. Negative of work done by field is equal to change in kinetic energy. So answer will be first. Consider two circuit A and B, each having two resistors. One of them has a positive temperature coefficient of resistance plus alpha, while the other one has a negative temperature coefficient minus alpha as shown in the figure. The current through these circuits are denoted by IA and IB. At initial temperature, the resistance of the two resistors is R0. As the temperature is increased, the correct option that describe the variation of current in these circuits. As temperature increase, there will be no change in the resistance connected in series. Delta R series is R naught alpha delta T plus R naught alpha delta T.
is equal to 0 in series. So there will be no change in current in series. IA remain constant, which is in option 3. In parallel, as temperature increase, resistance of negative temperature resistance coefficient wire will decrease. As we know, in parallel, effective resistance is smaller than the smallest resistance. So, in parallel, resistance will decrease and current will increase. In parallel, effective resistance will decrease. So, current will increase, which is in option 3. So, answer will be 3. A conducting loop of finite resistance lie on the xy plane. There is a constant magnetic field in the z direction. The area of loop varies as A is equal to A naught 1 plus sin t. In appropriate unit, the figure that correctly indicates the quantitative behavior of the power P dissipated in the loop as a function of time is. As we know, phi is equal to BA, B dot A. Angle between A vector and B vector is 0. So phi is equal to BA. B A is A naught 1 plus sin t. Differentiate with respect to time. D phi by dt is equal to B A naught cos t. Induced EMF E is equal to minus d phi by dt minus B A naught cos t. Power dissipated P is equal to V square by R. V square A square cos square t by R. This is function of cos. At t is equal to 0, cos 0 is 1, so power will be maximum. And as time increase, value of cos t will decrease, which is in option 4. So P is equal, answer will be 4. A photon and an electron, each of 20 MeV energy, move in free space. The ratio of linear momentum of electron Pe to that of photon is Ph. Pe is Ph upon Pe. That of photon P E by Ph. Pe is root 2 m into E. P photon is E by C.
E by C. Question number 18. PE by PH. So PE is root 2 ME by E upon C, which is equal to C into root 2M by E. 2M is minus 31 and E is 20 electron volt. 20 10 to the power 1.6 into 10 to the power minus 90. 8 into 3 10 to the power 6 by 4. 900 by 4, that is 225, which is in option 1. So answer will be 1. Two infinitely long parallel conducting wire. Consider that sigma s k Boltzmann constant, b Wien's constant Stephen's represent Stephen constant, Boltzmann constant, and Wien's displacement law constant, respectively. The dimension of sigma s kb minus 1 b is, according to Stephen's law, E by 80 sigma t की power 4. Sigma is equal to E by 80 into t to the power 4. So dimension will be mt minus 3 k minus 4. B is constant E by t. M L2 t minus 2 k minus 1. And B is equal to lambda t, that is Lk. So sigma s into B by kb, mt minus 3 k minus 4 L k m L2 t minus 2 k minus 1 L minus 1 t minus 1 and k minus 2. L minus 1 t minus 1 k minus 2.
which is in option 3, k minus 2. L minus 1, t minus 1, k minus 2. Answer 3. Two infinitely long parallel current carrying wires A and B carry current I and 2I respectively in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda and lie on the insulating floor. The wire B is kept fixed at height h above the floor. The minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor is. In the given question, wire is kept on the floor. This is height h. Current I and current 2I in same direction. Mass per unit length m by L is equal to lambda. Two force act on the wire, that is mg and magnetic force. In equilibrium, F magnetic is equal to mg. Magnetic force between two parallel current carrying wires mu naught upon 2 pi I1 I2 L by H is equal to mg. Now mu naught upon 2 pi I1 is I, I2 is 2I by H. M by L is given as lambda into G. So H is equal to mu naught I square pi lambda into G. Answer 4. Answer 4 will match. Which of the following measurement require index correction? Bench correction, index correction are used in measurement of focal length of lens by bench experiment. So option 1 is correct. Answer 1. रेजोनेंस ट्यूब में हम कैलकुलेट करते हैं एंड करेक्शन. Measurement of resistance of wire by using meter bridge, we use end correction. So the index correction is used in only measurement of focal length by optical bench. Answer 1 is correct. Two identical inductors are connected in two different configuration P and Q where a time varying current IT is flowing as shown in the figure. The induced EMF between point A and B for configuration P is EP and that in configuration Q is EQ. The ratio of EP by EQ is in figure P. Inductors are in series. L series is equal to L plus L is equal to 2L. In figure Q,
Inductors are in parallel. So L parallel is equal to L into L by L plus L, that is L by 2. EP 2L di by dt. ES E series E parallel L by 2 di by dt. So ES by EP is equal to 4. Answer may be third. What it is 1 by 4? It may be 4. It may be printing error. Three identical PN junction diode D1, D2 and D3 are connected across battery as shown in the figure. If the width of depletion region of D1, D2 and D3 are W1, W2 and W3 respectively, then the correct option is junction diode D1 is forward biased. Forward biased. So width of depletion region decrease. Will decrease. So W1 is minimum. D2 is no biasing. So W2 greater than W1 and D3 reverse biased. So it is maximum because in reverse biased width of depression layer will increase. So W3 greater than W2 greater than W1. Option first. Answer will be 1. Three identical capacitors PQ and S, each of the capacitance C, are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system are UP and UT respectively, then UP by UT is. In the given circuit, P and Q are in series, so potential will divide equally and total energy stored in P is. So UP is half C V by 2 whole square. 1 by 4
1 by 8 CV square. The effective capacitance of whole combination is 3C by 2. So UT is equal to half 3 by 2 C into V square. UP by U total 1 upon 8 CV square 3 by 4 CV square 4 by 24, that is 1 by 6. So answer will be 2. A thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and LB, computed about points A and B respectively, with OB is equal to 2 into OA. The value of LA by LB is L about any axis, L about center of mass plus R cross P. Because disk is rotating about its own axis, so VCM is 0. P VCM is 0. So linear momentum P is equal to 0. So LA is equal to LB is equal to LCM, that is I omega. So LA upon LB is equal to 1. So answer will be first. An ideal Zener diode with breakdown voltage of minus 3 volt is reverse biased with a negative input voltage minus 5 volt. The magnitude of voltage difference between point B and A. In Zener diode at breakdown, because applied voltage is greater than Zener breakdown voltage, so breakdown will take place at minus 3 volt. So remaining potential will drop between point B and A. So potential difference between P and A is 2 volt. Answer will be 4. Water flows in a streamlined motion through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure. The pressure difference of water between P and Q is 15 Newton per meter square. The area of cross section at P and Q is 40 centimeter square and 20 centimeter square. Respectively, the rate of flow of water through the pipe in centimeter cube per second is. Take density of water as 1000 kg per meter cube. This problem is related with the Bernoulli's theorem and equation of continuity. According to Bernoulli's theorem, P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square.
half rho V1 square V2 square by V1 square minus 1. According to equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2. So V2 by V1 is equal to A1 by A2. So P1 minus P2 is 15. Half rho is 1000. V1 square. V2 by V1 is A1 by A2. So 40 by 20 whole square minus 1. 30 by 1000 V1 square 4 minus 1 3. So V1 square is 1 upon 100 and V1 is 1 upon 10 meter per second. Rate of flow Q is equal to A1 V1. 40 into 1 by 10, convert meter per second into centimeter per second, that is 100. So 400 centimeter cube per second. So answer will be 2. A particle of mass m move along a horizontal x-axis from x is equal to 0 to x is equal to L. The coefficient of kinetic friction varies as a function of x as mu k x is equal to mu naught minus alpha x, where mu naught and alpha are constant of appropriate dimensions so that mu k L not equal to 0. The total work done by the frictional force during the motion is n mu naught mg, where g is the acceleration due to gravity. The value of n is, because coefficient of friction is variable, so force will be variable. So calculate for very small displacement dw is equal to F force of friction dot dx. Mu mg dx. Mu is mu naught minus alpha x. Dx mg. Mu naught dx minus alpha x dx mg. Now integrate both sides. W is equal to
dx minus alpha, whereas alpha is given mu k L is equal to 0. It is mu naught minus alpha L is equal to 0. So alpha is equal to mu naught by L. Alpha x dx. So W is equal to limits 0 to L. Mu naught into L minus alpha L square by 2 into mg. Alpha is mu naught by L, which is mu naught L mg by 2. As given, W is equal to N mu naught mg is equal to L mg by 2. N is equal to 1 by 2. Answer will be 2. Ray of light with wavelength lambda is incident with three different photoelectric cells, namely 1, 2, and 3. The threshold wavelength of the photoelectric cells are lambda 1, lambda 2, and lambda 3, respectively, and the magnitude of stopping potential of these cells are V1, V2, and V3, respectively. The relation between lambda and threshold wavelength are lambda 1 less than lambda, lambda 2 greater than lambda, and lambda 3 greater than lambda. The correct option is, as we know that EVC as Cy lambda minus HCy lambda naught, that is threshold wavelength. If threshold wavelength is large, then energy will be maximum. So cutoff voltage will be maximum. Larger the value of threshold wavelength,
greater will be energy. Have emitted electrons. So greater will be cutoff potential. Lambda 1 less than lambda. Lambda 2 greater than lambda. Here magnitude of stopping potential of these cells are lambda 1 less than lambda. No electron will come out. कोई electron नहीं निकलेगा. So V1 is 0. No electron will come out. And greater will be threshold wavelength. Lesser will be energy of lesser will be work function. So more will be kinetic energy. So V2 less than V3. Option 3 is correct. Consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity root 25.6 into 10 to the power 5 meter per second. The radius of orbit is x into 10 to the power minus 9 meter. The value of x is mass of electron is given, charge of electron is given, and epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9. Velocity of electron in any orbit. V is equal to 2.16 into 10 to the power 6 Z by n meter per second, which is given as so 2.16 into 10 to the power 6 Z is 1 by n is root 25.6 into 10 to the power 5 meter per second, which on solving gives n is equal to 4.27 approximately. As R is equal to 0.53 n square by z is given as x into 10 to the power minus 9. On solving, x is approximately 1. So answer will be 2.
A car travel on a circular track of radius 50 meter, which is banked at an angle theta. If the car travel at a speed of 10 meter per second, then the wear and tear on its tire is minimum, taking the acceleration due to gravity to be 10 meter per second square. The value of theta is. For least wear and tear, 10 theta is equal to V square by Rg. So 10 theta is V square. Car is traveling with a speed of 10 meter per second. R is 50 meter and G is 10. Theta is 10 inverse 1 upon 5. That is answer will be 3. One mole of an ideal monoatomic gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. The total heat supplied to the gases because process is cyclic. So delta U is equal to 0. According to first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. So Q is equal to W is equal to area of rectangle, which is 200 into 3. That is 600 joule. Answer will be 1. If frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane, two particles of unit mass start moving simultaneously from point A, theta is equal to pi by 2, with identical uniform angular speed in opposite direction, and meet at point B, theta is equal to minus pi by 2. During this time, which of the following figures systematically represent the magnitude of total linear momentum? For particle 1, P1, this is theta. Velocity will be this. Particle 1, particle 2. Theta 90, 90 minus theta. So this angle will be theta. So P1 is M V1. M R is 1,
omega. One component will be in this direction and one will be in this direction. M sin theta I minus cos theta j. P2 is M omega minus sin theta I minus cos theta j. Magnitude of total linear momentum P1 plus P2. Total momentum is minus 2m omega cos theta j. So graph will be of magnitude of P is proportional to cos theta j. At A, theta is 90 degree. Pi by 2. So P is equal to 0. At B, theta is equal to minus 90 degree and P again 0. So graph will be 1. Answer 1. The lens combination as shown in the figure consists of two lenses L1 and L2 of focal length plus 10 centimeter and minus 10 centimeter respectively. The position of the image formed is, this is convex lens and this is concave lens. Object is at 30 centimeter. F plus 10 centimeter minus 10 centimeter and this distance is 3 centimeter. First, for convex lens, U is equal to minus 30, F is equal to plus 10 centimeter. So image formed by convex lens 1 upon F, V minus 1 upon U, 1 upon 10, 1 upon V plus 1 upon 30. 1 upon V is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 30. 30, 3 minus 1 or V is equal to 15 centimeter. This image formed by convex lens
I1 behave as a virtual object for concave lens. So for concave lens, this distance is 15 centimeter. So this distance is 12 centimeter. For concave, u is equal to plus 12, f is equal to minus 10 centimeter. So 1 upon f, 1 upon v2 u2. 1 upon minus 10, 1 upon v2 minus 1 upon 12. So v2 is 1 upon v2 is equal to minus 1 by 10 plus 1 by 12. LCM is 60. Minus 6 plus 5. So V2 is equal to minus 60 centimeter. 60. So answer will be 60 centimeter to the left of the concave lens. So final image will form at, this will diverge the light rays, and finally image will form at minus 60 behind the lens. So option 4 is correct. Two planets P1 and P2 with equal mass have radius R1 and R2 respectively, where R2 is R1 by 2. The escape speed of P1 and P2 are V1 and V2 respectively. Then V2 by V1 is. As we know, escape velocity VE is root 2 GM by R. For P1, V1 is root 2 G equal mass M by R1. For P2, root 2 G M by R2. Now V2 by V1. V proportional to 1 upon R. So V2 by V1 is equal to root R1 by R2. And R2 is given as R1 by 2. So V2 by V1 is equal to root 2. Answer 1. An electromagnetic wave traveling in a lossless dielectric medium having a dielectric constant epsilon R is equal to 9 has the electric field Ex is equal to E naught sine kz minus 2 pi into 10 to the power 60 volt per meter, where E naught is the amplitude and k is the wave vector. Among the following options, the incorrect choice is: the wave is traveling in positive z direction. Second is correct. The speed of electromagnetic wave inside the medium is 10 to the power 8 meter per second. This is correct. The magnitude of magnetic field is given by, this is correct. So incorrect option is
fourth. Answer will be 4. Consider a particle moving along a straight line whose position as a function of time is given by s is equal to alpha t square minus beta t plus gamma. Given alpha is equal to 1, beta is equal to 6, and gamma is equal to 5. So s is equal to t square minus 60 plus 5. Differentiate it. ds by dt is 2t minus 6. V is equal to 2t minus 6. Before 3 seconds, speed will be negative, velocity will be negative, and beyond 3 it will be positive. It means it at some instant velocity becomes 0. So Vt graph will be like this. T V vector at t is equal to, if V is equal to 0, 2t minus 6 is equal to 0, and t is equal to 3 seconds. At 3 seconds, speed will be 0. At 0 second, if t is equal to 0, v is equal to minus 6 meter per second. And this is graph of a straight line. T is equal to 6 second, t is equal to 3, t is equal to 6 second, minus 6, and it will be plus 6. The area of this graph gives total distance traveled. Is equal to area of graph. Area of VT graph. Half 6 into 3 plus half 6 into 3. That is 90, that is 18 meter distance traveled. We average total distance upon total time. 18 by 6 is equal to 3 meter per second. So answer 1 is correct. Answer will be 1. In a Giger-Marston experiment, the number of scattered alpha particle and theta is plotted as a function of scattering angle theta. Which of the following option represent the correct plot? In Giger-Marston experiment, n proportional to 1 upon sine theta by 2 to the power 4.
So graph 1 is correct. Answer will be 1. For sound wave, if the number of nodes for the fifth harmonics of an open-ended pipe is n, in open pipe, frequency of fifth harmonics is equal to 5 V by 2L. And that of the ninth harmonics of the same pipe with one off end is closed. In closed pipe, frequency of ninth harmonics 9V by 4L. Pipe is same. Fifth harmonics. One, two, three, four, five. Number of nodes is 5. In closed pipe, two, three, four, five. These are nodes. Number of nodes in both will be same. In both will be same. That is 5. So n by m is equal to 5 by 5 is equal to 1. This is fifth harmonics and this is ninth harmonics. Answer will be 1. Consider a long solenoid of length L and radius R if n is the number of turns per unit length and mu naught is the permeability of free space. The inductance of the solenoid is length of long solenoid of length L and radius R. N is number of turns. As we know, L is equal to mu naught N square A by L. Multiply, it can be written as
mu naught n square a l by l square. Mu naught n upon l whole square al. So l is equal to mu naught n square a l. Mu naught n square pi r square l. So answer will be mu naught pi n square r square l. Answer will be 3. A current I naught flows through a metallic wire of radius r as shown in the figure. The resistance of segment ABC is half that of ADC. Magnitude of magnetic field at the center O of the loop is. Here current will divide. Resistance of segment ABC is half that of the current that of the segment ADC. So two part of the current will pass through this part, 2I by 3, and I2 is I by 3. Current will divide in two segments, and I2 is equal to I upon 3, and I1 is equal to I by 3. Magnetic field due to straight part will be 0. Field due to straight part is 0. Then field of two semicircular part will be in opposite direction. So net field B is equal to BABC plus BADC. Both the field are in opposite direction. So BABC minus BADC. BABC is mu naught, number of turns half, I 2I by 3 by 2R. Mu naught, number of turns half, current I by 3 by 2R. This is 2 mu naught I by 12R minus mu naught I by 12R. So net field will be mu naught I by 12R, and it will be outward. So answer will be third. The temperature of a metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta T if the linear coefficient of thermal expansion of the metal is alpha. The approximate increase in the volume of sphere. Radius of sphere will increase. R will be
R temperature T are 1 plus alpha delta T. As we know, Vt is equal to 4 by 3 pi RT का क्यूब. 4 upon 3 pi R 1 plus alpha delta T cube. This is change in volume. Change in volume delta V. 4 by 3 pi R cube 1 plus 3 alpha delta T by using binomial theorem minus 4 by 3 pi R cube by using binomial expansion 1 plus alpha delta T cube is equal to 1 plus nx 3 alpha delta T. So delta V is 4 by 3 pi R cube 1 plus 3 alpha delta T minus 1 4 pi alpha R cube delta T. So answer will be 1. 43. One main scale division of vernier calipers is equal to 1 mm and the number of division on the vernier scale is 10. When both the jaw are touch each other, the vernier scale shift to the left of 0 of the main scale in such a way that vernier division coincide with a division of the coincides with a division of the main scale if the vernier calipers measure the length of a wire to be 1 centimeter. The actual length of the wire is answer will be 1.06 centimeter. No option is correct. Consider three medium PQ and R with refractive index 1, 1.25 and 1.5 respectively. The medium Q having a thickness of 5 centimeter, an object O is placed at the center of Q, medium Q viewed from medium P. This is P. Medium P near the normal direction, the apparent depth of object is H1.
For similar observations from medium R, the apparent depth is h2. Object lie at center. This is 5 centimeter. This is 2.5 and this is 2.5. If observer in medium P in medium P, the value of h1 minus h2, mu2 by mu1 is equal to apparent depth by real depth. mu2 is 1, mu1 is 2.5, mu2 is 1 and mu1 is 1.25. Apparent depth h1 and real depth 2.5. So h1 is 2 centimeter. If observer is medium R, if observer in medium R, then mu2 is 1.5 and mu1 is 1.25. Apparent depth h2, real depth 2.5. h2 is equal to 3.0 centimeter. So mod h1 minus h2, 1 centimeter. So answer will be 4. A point charge Q is placed inside a cavity within a solid isolated conducting sphere. Consider point A, B and C as shown in the figure, where the magnitude of the electric field are EA, EB and EC respectively. The point B and C are at the same distance from the center of the solid sphere. The correct option is EA is not zero. In a solid sphere, electric field within the cavity is uniform but non-zero. In non-conducting sphere, uniformly charged sphere, E cavity, that is EA, not zero. And B and C are at equal distance. And outside the sphere. So charge can be assumed at center.
and EB is equal to EC is equal to KQ by R square. So option 4 is correct. Answer will be 4. Answer will be 4. Thank you. Dear students, now we are starting with the discussion of needed paper for the subject chemistry. We should start with the first question 46. The lanthanide ion having 4 unpaired electrons. इसका आंसर तो थर्ड है, होलोनियम थर्ड. एक्शन में इसकी कन्फिगरेशन है होलोनियम की 6s2 5d0 4f11. यदि हम होलोनियम थर्ड लेते हैं, it means 6s2 is vacated, 6s0 5d0 and 1 electron is removed from 4f11. This is 4f10. यदि 4f10 को हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it has 4 unpaired electrons. That's why answer is polonium. Now we get to 47 question. The standard electrode potential E0 for the half cell reaction Fe3+. तो इसके लिए हम क्वेश्चन में इक्वेशन जो हमारी डिमांडिंग इक्वेशन है वो है Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग टू Fe2+. उसकी जो गिवन सेल्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो ये आएगा आपका एक इक्वेशन बनती है हमारी Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Fe, और इसके लिए जो E0 है दिस इज -0.04 वोल्ट. ठीक है, इसका डेल्टा G1 नोट कैलकुलेट करते हैं हम लोग. दिस इज -NF E0. तो ये आता है इसका -3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इंटू F इंटू -0.04. तो दिस इज प्लस 0.12F. जो हमारी दूसरी इक्वेशन है Fe2+ प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग इनटू Fe, इसके लिए डेल्टा G02 जो आएगा वो आ जाएगा -2 इंटू F, और इसका जो E0 वैल्यू है -0.44. दिस इज 0.88F. अब आपको मालूम है कि E0 को हम डायरेक्टली ना ऐड कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, बट डेल्टा जी कर सकते हैं. तो डेल्टा G3 नॉट 3 जो इस इक्वेशन के लिए डिमांड इक्वेशन के लिए, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, जब हम इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करें तो हमारी डिमांड इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, इसमें से ये वाली माइनस कर दें तो डेल्टा G0 हो जाएगा डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02. तो ये बैठ रहा है डेल्टा G0 जो 1 बैठ रहा है हमारा -1F E03, और डेल्टा G1 बैठ रहा है प्लस 0.12F, और ये है -0.88F डेल्टा G02. तो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर E0 की 3 की वैल्यू, F से F कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद में, तो E0 3 की वैल्यू आती है प्लस 0.76 वोल्ट. तो आंसर इज 4. नाउ वी कम टू 48 क्वेश्चन. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट हीटिंग NaCl. तो इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं पहले यहाँ पर कि यह इक्वेशन है आपकी 4NaCl प्लस MnO2
plus 4H2SO4 change into 4NaHSO4 plus MnSO4 plus 2H2O plus Cl2. सेम इक्वेशन आएगी 4Na से MnO2 4H2SO4 4NaHSO4 MnSO4 2H2O प्लस यहाँ हो जाएगा I2। अब इस वाले केस में जो Mn की स्टेट यहाँ +4 है, ये +2 में कन्वर्ट हो रही है। तो यदि स्टेटमेंट देखें पहला वाला इसमें कि हीटिंग NaCl विद कंस्टेंट H2 और MnO2 रिएक्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसका तो रिडक्शन हो रहा है +2 से +4 से +2। तो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हीटिंग Na विद कंस्टेंट H2 और MnO2 रिएक्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ Mn, तो यहाँ रिडक्शन हो ही रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर है सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। Now we come to the next question, the complex which has facial and meridianal isomers। तो पहले फेसियल मेरिडियन देखें। सबसे बड़ी चीज ये है कि फेसियल मेरिडियन जो होते हैं वो Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। तो इसमें जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये अकेला इसमें यही फिट हो रहा है इसमें, और वैसे ही वो स्ट्रक्चर बना रहे तो मेरिडियनल क्या होते हैं और फेसियल क्या होते हैं। फेसियल में लिगेंड्स एक फेस पर होते हैं, जैसे यहाँ क्रोमियम है Cl Py Cl Cl Py एंड Py। अब ये तीन मिलकर एक फेस बना रहे हैं इस तरीके से। इधर ये फेस बनना है, तो ये फेसियल कहलाते हैं। तो मेरिडाइनल की बात करते हैं। CrPyCl3 का इस टाइप से बनेगा आपका। एक्चुअली अर्थ के ग्लोब में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को टच करने वाली जो लाइन होती है, ये इस तरह से आती है, इनको मेरिडियन कहते हैं, और इसी बेसिस पर नाम है मेरिडाइनल। तो यहाँ पर देखा तो ये तीनों मिलकर के एक मेरिडाइनल बना रहे, एक पोल से दूसरे पोल पर जाने के लिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज थर्ड। Now we come to question 50. Among the following the compound having conjugated double bond, this is heptadiene diene। एक दो तीन चार छह और 1 3 1 और 3, यही यहाँ पे कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो आंसर इज थर्ड, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ PCl5 जो है हमारा, ये आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, PCl5 के अंदर sp3d, सॉरी, और ये मैच करता है आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल से। BRF5 इसकी व्यक्ति हाइब्रिडाइजेशन BRF5 की sp3d2, और ये मैच करता है स्क्वायर पिरामिडल से, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, BF4 ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन बैठती है इसकी, तो इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आएगा। और डी का तो रहेगा पर आपका सेकंड स्क्वायर प्लेनर NiCN का, इसमें D2sp हाइब्रिडेशन होती है, DsP2 सॉरी, DsP2। तो आंसर बैठता है आपका फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। द एमिनो एसिड गिव्स रेड ब्लड क्लैट्स, बता देते हैं यहाँ पर। जिन कंपाउंड्स में ये आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन होती है, जहां हम एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं कंपाउंड का, एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर ये पहली बात है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड फॉर्मूला है Na2FeCN5NO।
दिस इज सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये डिसोसिएशन में देता है Fe3+ आयंस, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। Na2 बेसिकली एमिनो एसिड दैट गिव्स रेड ब्लड कलर। रेड ब्लड कलर होता है एक्चुअल में जिस एलिमेंट में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, वो सोडियम एक्सट्रैक्ट मिलकर बनाते हैं HCN- आयन। और HCN- आयन जो होता है ये Fe3+ जो सोडियम नाइट्रोक्साइड में उसके आपको देता है फेरी सल्फोसाइनाइड आयन। दिस इज 2+, और दिस इज रेड ब्लड कलर। और मिथ्योनिन के अंदर ये नाइट्रोजन सल्फर दोनों होते हैं, इसलिए आंसर है आपका 52 का फर्स्ट मिथ्योनिन। रहता है प्रोटीन, ये प्रोटीन अंडरगोस रिवर्सिबल थर्मल डिनेचुरेशन में दे रखा है। इक्विलिब्रियम हमारा जो दे रखा है एन चेंज टू डी, और गिवन है कि एन इक्वल टू डी, इसलिए इसका जो के निकालेंगे के इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा जी निकलता है, सॉरी 1, दिस इज 1। डेल्टा जी यहाँ पे निकलता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -RT ln k, तो ये हो जाएगा -RT ln 1। और ln बोले तो लॉग टू द बेस ही, ln 1 जो होता है इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको फॉर्मूला करता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब गिवन है ये तो 0 हो गया, ये गिवन है डेल्टा एच नॉट 666, और टी है टेम्परेचर ऐड कर लेंगे 60 + 273 जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 में ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 333। इसका पुट किया इनटू डेल्टा एस नॉट। अब डेल्टा एस नॉट की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो ये आती है आपकी 2 किलोजूल केल्विन पर मोल, और इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन 54, KB is a zero order reaction where k equal to 1.0। तो देखिए सर इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है वो आती है इसमें k नॉट माइनस 8t अपॉन t इक्वल टू k। अब यहाँ पर इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2k लिखेंगे हम लोग इसकी जगह पर। ठीक है, अब यहां से ये आपका है a नॉट माइनस 80, क्योंकि 75% इक्वेशन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो 80 इज 0.25%। ये कह सकते हैं हम लोग 1 a नॉट माइनस 0.25 ए नॉट, तो दिस इज 0.75 ए नॉट। ठीक है, और ये बैठता है आपका कहना 2k, तो k की वैल्यू है 0.75। 0.75 इंटू 2 इक्वल टू 1, हाँ ये तो ए नॉट की वैल्यू बैठ रही है, 2 इंटू 0.75 इज 1.5, तो ये 0.7 ए नॉट की वैल्यू आ गई। और यहां पर ये हम रखेंगे यहाँ पर ए नॉट माइनस 80 इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू 2k इंटू टी, और ये 1.5 वैल्यू बैठी थी हमारी, तो k की वैल्यू गिवन है 1, और t निकालना है हमें यहाँ, तो t निकल के आता है इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.75, तो आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसमें इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर जो आपका इसका आंसर दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनका स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो देखिए पहले इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये OX जो है ऑक्सलेट आयन के लिए है,
कुल मिलाकर के यहाँ पर ये एसिमेट्रिक बोले तो कायरल है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनना है उसका ट्रांस वाले का। ये हमारा एक आयरन है, यानी कि सिमेट्रिक है। इसलिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको कारक बोला है, ये सही है, ये हमारा एक कारक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर इज फर्स्ट। अब यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन नंबर 56। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ये जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मैग्नेटिक बॉन्ड, ये सही स्टेटमेंट है। आपका ये ठीक है साहब। और इसमें आता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। एक्चुअल में यहाँ पर पार्शियल कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एसोशन। फिर आता है क्वेश्चन 58 57 सॉरी, क्वेश्चन फॉर्म नंबर 57 में यदि इनकी कन्फ्यूजन हम देखते चले यहाँ पर, तो टाइटेनियम जो होता है होता है 4s2 3d2। जब टाइटेनियम 3+ हो गया तो इट बिकम्स 4s0 3d1। तो इसकी कन्फ्यूजन होगी T2Z1 EZ0, इसका मतलब अंतर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा आता है मैंगनीस, इसका मैंगनीस की कन्वर्जन होती है 4s2 3d5। हम Mn यदि +3 लेते हैं तो इट बिकम्स 4s0 3d4। इसकी कन्वर्जन हो जाएगी टी, कभी सारे ऑक्टाहेड्रल है तो T2Z लोअर लेवल है और EZ हायर लेवल है, तो हो जाएगी T2Z4 EZ0। T2Z4 की यदि हम बनाने की कोशिश करते हैं, 3 बॉक्स हैं जो डिजनेट ऑर्बिटल्स हैं, उनमें 1 2 3 4, तो इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज। आयरन की बात करते हैं तो आयरन इज 4s2 3d6, बट आयरन 3+ is 4s0 3d5। इसकी यहां पर देखते हैं तो इट बिकम्स T2Z5 EZ0। अब इसी T2Z4 में T2Z5 करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये पड़ेगा, इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe3+। इसमें बात करें इसके कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट इज 4s2 3d7 और कोबाल्ट 3+ 4s0 3d6। इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी T2Z की बात करिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, दिस इज T2Z6 EZ0। उसमें आते से यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट मैंगनीज हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी कम टू, ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ से है, ये बुक्स में मिल जाएगी आपको, पूरी सीरीज यहाँ लिखना संभव नहीं है। और इसके हिसाब से सही आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है 59। पोटाशियम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24s2। अब यहाँ पर सल्फेट आयन टोटल 1 + 3 4 हो गए, पोटेशियम आयन 2 है, तो दिस इज 2:4।
So ratio will be 1:2. So answer will be third. Now we come to question 60. As such, the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine. तो देखिए इनकी ये हकीकत है कि नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी 1402, ऑक्सीजन की होती है 1315 और फ्लोरीन की होती है 1680। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ, तो देखिए ऑक्सीजन की कन्वर्जन होती है 2s2 2p4। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होगा so it becomes 2s2 2p3 and this is stable configuration। तो इस नाते से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब स्टेबल कंफ्यूजन मिलेगी तो वही एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजीली छोड़ देगा। और नाइट्रोजन के एक्सेप्शनली हाई है, इसका लॉजिक ये भी है 3s2 2s2 2p3 कन्फिगरेशन है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 2s2 2p3 कन्फिगरेशन अचीव कर रहा है नाइट्रोजन वाली, इसलिए ये कलम स्टेबल होगा और बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है साहब। फिर आता है 61 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका आंसर थर्ड है, इसका पहले आंसर लगा देते हैं, बताते हैं आपको। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलिन विद एसिटिक केमिकल फोर, देखिए पैरानाइट्रोटोलिन है आपकी ये, ऑक्सीडेशन पे इट विल गिव पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। और क्योंकि किसी एसिड के पैरेलल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो तो वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ये। दूसरा आता है आपका कंपाउंड, पैरानाइट्रोटोलिन को हमने रिड्यूस किया विद एसएन प्लस एससीएल, तो ये देता है NO2 रिड्यूस होगा, NH2 बन जाएगा। दिस इज पैरामिथाइल एनिलीन। और पैरामिथाइल एनिलीन जो है, जो एमिन बन रही है, वो स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन है, प्लेन एनिलीन, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस आई और प्लस हाइड्रोकंजुगेशन इफेक्ट दोनों इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा स्टेटमेंट थर्ड है कि दोनों ही अपनी जगह पर करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द, तो यहाँ पर देखिए इधर से इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको स्टेबलाइज करेंगे। और दूसरा यदि हम CH3 के हाइड्रोकंजुगेशन वाले बॉन्ड देखे, जैसे मान लो एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो ये भी इसको स्टेबलाइज करेगा। तो कुल मिलाकर के फिल्ड सिग्मा एंड फिल्ड पाई ऑर्बिटल दोनों ही, तो इसका आंसर है थर्ड, दोनों इसको स्टेबलाइज करते हैं। चलिए सिक्स थर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये आता है कि जो साई आर है, साई आर जीरो को जब भी पास करेगा जितनी बार, उतने ही नोट्स इसमें बनेंगी, चाहे वो नेगेटिव में क्रॉस करे जीरो वाली लाइन को, चाहे पॉजिटिव में क्रॉस करे। तो इस वाले केस में तो क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है नोड इक्वल टू जीरो। इस वाले वंस क्रॉस कर रही है, दोबारा नहीं कर रही है, तो नोड इक्वल टू वन। इसमें एक बार क्रॉस करके नेगेटिव हुई है, फिर क्रॉस करके पॉजिटिव हुई है, तो इसलिए यहाँ पर नोड्स इक्वल टू हो जाएंगे टू। और इस वाले केस में केवल वंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, आर इक्वल टू जीरो वाली नहीं मानते, आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाले में नहीं, नोट्स नहीं मानते। इन दोनों केस में नोट्स नहीं मानी जाएंगी। क्रॉस जब करके माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हो, तो यहाँ पर एक क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पर नोट्स इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर में टू रेडियल नोट्स, तो ये आंसर कौन सा है इसका? सी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है साहब। फिर आता है द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन सॉल्ट इन द वाटर। तो देखिए पहले एच की हम निकालते हैं इनकी सॉलिडिटी प्रोडक्ट के हिसाब से। यदि हम AgBr की बात करते हैं, एडीसी प्लस और प्लस Br माइनस, तो वन माइनस एस इक्वल टू एस इंटू एस, तो KSP यहाँ जो हो जाएगा इक्वल टू एस इंटू एस, देयरफॉर एस इक्वल टू हो जाएगा रूट KSP। AgBr के केस में जब इसकी वैल्यू निकल के आती है, आप कैलकुलेट कर लिया, तो दिस इज 7 इंटू 10⁻⁻7। तो दूसरा लेते हैं जिंक OH होल ट्वाइस चेंजिंग इनटू Zn प्लस 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 ट्वाइस OH माइनस, तो 1 माइनस एस एस टू एस,
तो यहाँ पर के एस पी बैठता है इक्वल टू 4s क्यूब, एस इक्वल टू रूट क्यूब रूट ऑफ के एस पी बाई 4। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू बैठती है इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻6। लास्ट है हमारा HgCl2, Hg2Cl2, तो दिस इज Hg2 2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, यहाँ पर भी हमारा जो सॉलिडिटी बनेगी वो बैठेगी क्यू रूट ऑफ के एस पी बाई 4। एस की वैल्यू पुट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 6.9 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, जिंक हाइड्रोक्साइड की आ रही है, उससे कम वैल्यू किसकी आ रही है, फिर एजीबीआर की आ रही है, फिर उससे कम वैल्यू इसकी आ रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ZnOH, सेकंड वाला आंसर, ZnOH हायर देन एजीबीआर देन Hg2Cl2। 13 इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या होता है टू एनाइन रेशो होता है, कीटाइन टू एनाइन रेशो। इस वाले केस में 1:3 का रेशो आ रहा है खाली, ये जो टूटेगा वो टूटेगा CO NH3 का होल 6 प्लस 3 प्लस थ्राइस Cl माइनस, तो दिस इज 1:3। योर आंसर इज फर्स्ट 65 का। 66 में चलते हैं। बीटा प्लीटेड शीट जो इस तरह से बनती हैं, इनमें C11O एक ग्रुप का और दूसरे का NH, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से बीटा प्लीटेड शीट बनती है अपने आप। तो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए अल्फा हेलिक्स जो इसमें लिखा हुआ लेफ्ट हैंडेड जो होती है, लेफ्ट हैंडेड नहीं होती, वो राइट हैंडेड होती है अल्फा हेलिक्स। दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ओनली द प्रोटीन्स हैविंग अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव, तो इसमें दो एंजाइम वो बता रहा हूं मैं आपको, प्रोटीन्स मायोग्लोबिन और ग्लोबिन लाइसोजाइम, 3D स्ट्रक्चर लगते हैं बट दीज आर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, तो इसलिए स्टेटमेंट निकलाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इसकी रिएक्शन जनरली होती है कि RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड गिबरेलिक एजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट है जो एक्टिव हाइड्रोजन दे सके, तो ये R और ये H मिल जाते हैं उससे, जैसे कि ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया वाटर का, या हो गया एमीन का NH2 का, तो ये RH बन जाएगा मेनली। तो यहाँ पे R हमारा H इसका निकल के आएगा तो कंपाउंड बनेगा हमारा ये, तो इसका आंसर है सेकंड। क्या होता है एसिड में 10 ml ऑफ 0.5 KMnSO ऑक्सिलिक एसिड को KMnO से टाइट्रेट किया हुआ है। बेसिकली जो ऑक्सिलेट आयन का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन C2CO2 में, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर है जिसे यूजुअली एन फैक्टर कह जाते हैं इक्वल टू 2 बैठेगा इसका। ये भी KMnO4 की रिएक्शन की बात करें इसमें, तो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Mn2 प्लस एसिड मीडियम में प्लस 4H2, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस फैक्टर N इक्वल टू 5 बैठता है इसका। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होती है, तो N1V1 इक्वल टू N2V2, और नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, तो M इंटू N1, इसको N1 ले लेते हैं, इसको N2 ले लेते हैं, इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू N2 इंटू V2, ठीक है। M1 भी रखा है, क्या नाम है 0.25, N1 2 है, वॉल्यूम 10 ml है, M2 हमें कैलकुलेट करना है, N2 की वैल्यू 5 है, वॉल्यूम 10 ml है, 10 से 10 क्रॉस हुआ, तो ये हो गया आपका 0 M2 इक्वल टू हो जाएगा
0.5 अपॉन 5 इक्वल टू 0.1. तो आंसर इज थर्ड. चलिए अब आता है आपका 69 क्वेश्चन. अरे लेविनास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां पर होता है आपका सिस एल्कीन बनेगी सिन एडिशन की वजह से. तो ये पी एच सी डबल बॉन्ड सी एच एच और सी एस सी. दिस इज सिस कंपाउंड. ठीक है. और इधर ये बिच रिडक्शन है. और यहां होता है एंटी एडिशन यानी पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच और एम ई. तो इस नाते से के और एल जो है वो अपने आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही बैठ रहा है. आंसर है इसका थर्ड. और यदि इनके आगे हम इसमें जो एच पी आर है ये फ्री रेडिकल एडिशन शो करता है और यहाँ जो एच पी आर है ये मार्कोव एडिशन शो करेगा. इसके बेसिस पे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं एन और एम जो है वो पोजिशनल आइसोमर्स बनते हैं. दे आर पोजिशनल आइसोमर्स. तो इसलिए बाकी हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारा 69 का. 70 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 70 की. तो देखिए यहां पर ईथर्स की विशेषता होती है कि यहां पर ये इसका पोलरिटी इस डायरेक्शन में बॉन्ड डायपोल और एटॉमिक डायपोल तीनों मिल जाते हैं. लेकिन जितना एंगल ये बड़ा होता जाएगा और बड़े एंगल के लिए इनका ग्रुप बड़ा होना रिस्पॉन्सिबल होता है. आर जितना बड़ा होगा एंगल बड़ा होगा और एक दूसरे के लिए अपोज करना शुरू कर देंगे. और एग्जैक्टली मान लीजिए मैं इमेजिन करूं 180 को तो ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे. तो हायर द एंगल मोर द कैंसिलेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट लेस इज द पोलरिटी. इस नाते से बात कीजिए दिस वीकली पोलर. ठीक है. ये हाईली पोलर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. ये मोस्ट पोलर है और ये मॉडरेटली पोलर है. इसका आंसर जाता है डी सबसे हायर होगा. तो ये हमारा सेकंड आंसर है इसका ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी. अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं. इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्लस माइनस की एरर है. अब उन लोगों ने क्या माना है वो जानते हैं एनटीए वाले. इसमें आर की वैल्यू तो हमारी 2 ली हुई है. ये पहला वाला जो है दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. दिस इज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन. ठीक है. दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन. एडियाबेटिक में Q इक्वल टू हमेशा 0 होता है. और जो W1 है हमारा पहले स्टेप में वो हो जाएगा माइनस NRT ln V2 अपॉन V1. वर्कडन वाटर सिस्टम है तो इट शुड बी टेकन नेगेटिव. और यहाँ पर R की वैल्यू को 2 लेकर चलनी है हमें यहाँ पर. तो ये 1 वोल्ट लिया तो N की वैल्यू तो 1 हो गई. तो -2T1 ये T है यहाँ पर T1 ln V2 अपॉन V1. अब ये पार्ट फर्स्ट की बात हुई. पार्ट सेकंड की बात की जाए तो डेल्टा U होता है इक्वल टू डेल Q प्लस W. और W Q क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क 2 है W2 इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा पहली स्टेप में जो एनर्जी है वो है डेल्टा U2 उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है. पार्ट 3 की बात की जाए फिर वो आइसोथर्मल हो जाता है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो W3 जो बैठता है अब यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इट शुड बी टेकन पॉजिटिव NRT2 ln V4 अपॉन V3. ठीक है. पार्ट 4 में फिर एडियाबेटिक है. तो यहां पर W4 हो जाएगा
इक्वल टू डेल्टा यू फोर, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू इक्वल टू जीरो है। तो यदि प्लस माइनस को नजरअंदाज किया है तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन W1 W3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मैच कर रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन से। -2T1 ln V2/1, हालांकि ये प्लस आना चाहिए यहाँ पर, इस जगह पर यहाँ पर दोनों ने माइनस दिया हुआ है तो ऑप्शन ये दे रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, द ग्रीन पैरामीटर। देखिए केवन फोर को जब भी हम स्ट्रांगली गर्म करते हैं दैट चेंजेस टू K2MnO4। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है सर, तो आंसर है इसका K2MnO4 थर्ड। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 73। तो इसमें ये यदि आपका क्वेश्चन है आपका 1.17.0145, तो क्योंकि यहाँ पर ये इवन नंबर है इसलिए इस 5 को ड्रॉप कर देते तो आंसर आता है 17.014। दूसरा है हमारा 21.0235। अब ये और नंबर है, अब इस 5 को ड्रॉप करते हो 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 21.024 हो जाएगा, और ये आंसर मैच कर रहा है आपका फर्स्ट, तो 73 का हुआ फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा हुआ बच्चों के हिसाब से। इसमें हेलोजनेशन ऑफ एल्किन इज एंटी एडिशन trans 2-butene per upon treatment with Br2-CCl4 gives the following product. Says 2-butene upon treatment with alkaline KN4 gives the following product. Statement 1 है trans 2-butene upon treatment with Br2-CCl4 gives the following product. अब इसमें देखते हैं, देखिए साहब यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हेलोजनेशन ऑफ एल्किन इज एंटी एडिशन। ठीक है साहब, तो ये कंपाउंड जो अब यहाँ पे जो रूल के साथ लिखा गया है स्टोकेस्टिक रूल के हिसाब से ट्रांस एल्किन प्लस एंटी एडिशन इक्वल टू मीजो कंपाउंड। ठीक है, यदि हम कॉमन इसकी स्टडी करते हैं तो मान लीजिए 160 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, इसको हम एक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक्लिप्स इस फॉर्म बनती है हमारी इसकी, ये 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद में। पीछे वाला कार्बन रोटेट किया हमने, आगे वाला नहीं किया, तो ये बी आर पहुंच जाएगा यहाँ पर, एच पहुंचेगा यहाँ पर और एम ई पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है साहब, अब इस वजह से देखा जाए तो जो ग्रुप्स वर्टिकल पे आते हैं पिछला प्रोजेक्शन में वो अप्स एंड डाउन शो करे जाते हैं, तो बी आर यहाँ, बी आर यहाँ, तो ऊपर से यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं तो जो हमारे ग्रुप राइट हैंड साइड पे ये हमारा फ्रंट ना, ये फ्रंट कार्बन शो करता है यहाँ पर, और ये बैक कार्बन शो करता है। और फ्रंट कार्बन पे एम ई हमारा राइट हैंड साइड है, एच लेफ्ट हैंड साइड है, और बैक कार्बन पे एम ई हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और एच राइट हैंड साइड है। ठीक है सर, इसमें आते से देखा जाए तो ये एक इनइसोमेरिक फॉर्म शो कर रहा है। अब इसमें कहीं सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इस नाते से ये इनइसोमेरिक, ये मीजो कंपाउंड नहीं बनाएगा, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। मैंने कहा है कि पहला स्टेटमेंट जो बना के दे रहा है वो जो मीजो बनना चाहिए था, बट ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आइसोमेरिक बनना तो पहला हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेशन इज सिन एडिशन।
हाइड्रोक्सिलेशन इज सिन एडिशन। तो ये बैठता है आपका सिस एल्कीन प्लस सिन एडिशन, ये बनेगा मीजो कंपाउंड। जब मीजो कंपाउंड को स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो कंपाउंड है, तो फ्रंट कंपाउंड हो गया, वो कार्बन हो गया, बैक कार्बन ओ एच एम ई और एच। इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया बैक कार्बन को। सामने देखने पे लग रहा है हमें पीछे से, और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, हम कार्बन शो कर रहे हैं इसे येलो से, ओ एच एच एम ई, और यहाँ पर ओ एच के पीछे ओ एच आ जाएगा, एम ई के पीछे एम ई आ जाएगा, और एच के पीछे एच आ जाएगा। इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ओ एच, यहाँ ओ एच, इधर एम ई, इधर एम ई, इधर एच, तो ये मीजो बनना है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर मीजो और मीजो बनना चाहिए था, तो ये स्टैंड हमारा सेकंड सही है। तो आंसर हमारा जो बैठेगा, ये आंसर बैठेगा हमारा सेकंड। स्टैंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बट द स्टैंड सेकंड इज करेक्ट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75, चूज द कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जब वहां पर टॉलिन का ये इटार्ड रिएक्शन है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है ना ब्राउन कॉम्प्लेक्स, बना के दिखा देता हूं मैं आपको। दिस इज ब्राउन कॉम्प्लेक्स, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो दो OH लगेंगे यहाँ पर, एक H यहाँ, OH यहाँ, ऐसे ही ये टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ, तो दो OH लगेंगे, और सबको बता दें कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, वहां से पानी निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा CHO। दिस इज बेंजल्डिहाइड। और दूसरा जो उन्होंने बोला है कि बेंजोइल क्लोराइड का PDBSFO के साथ में पार्शियल रिडक्शन होता है, तो ये भी हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है चलो, तो ये हमारा आंसर इसका बैठता है सेकंड। कंपाउंड पी इसमें तो कंपाउंड पी इज आल्सो ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड हमारा ये इसका इसका पार्शियल रिडक्शन का है पीडी प्लस BSO4 की प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हमें आंसर्स को मैच करना है। विटामिन ए ये हमारा कैरेट में मिलता है, तो इसको ये लिखे हैं 4। विटामिन B12 ये मिलता है मीट में, तो इसको लिखे हैं फर्स्ट। विटामिन ई ये सनफ्लावर ऑयल में मिलता है, इसको लिखे हैं सेकंड। और विटामिन डी का रह गया फिर हमारा ग्रीन फ्लावर्स, विटामिन के का सॉरी थर्ड। तो ये आंसर हमारा मैच करना है फोर्थ से, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। चलिए अब ये इसमें रिएक्शन बनाने के क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना है यहाँ पर, तो रिएक्शन बनती है भाई ट्वाइस C4H10 प्लस 13O2 will give you 8CO2 प्लस 10H2। यहाँ पर इसका मोल मास है 58 इंटू 2, तो बैठ का 116। ठीक है साहब, और ये 44 इसका है इंटू 8, ये बैठता है 352। तो आंसर है हमारा थर्ड।
ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए यहाँ पर जो 5वां कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, और इसके अंदर कोई भी अल्फा नहीं है, बेंजल इट विल नॉट फॉर्म न्यूक्लियोफाइल। इसको हम मान लिया नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2, और ये हमारा जो कंपाउंड बनाई है 1 on 1 है, मीन्स 1 का न्यूक्लियोफाइल 1 के ही कार्बन पे अटैक कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से 1 on 1 है। पहले कार्बन एल्डोल, और एल्डोल होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यदि हम इसको एल्डोल बनाने के बाद में फिर उसको हीट अप कर देते हैं तो ये बनता है, तो ये हमारा इसके रेसिपी बीटा बनना है। ये भी अल्फा बीटा एल्डिहाइड बनना है, इसमें ये है 1 on 2, यानी 1 का न्यूक्लियोफाइल पीएस सीएचओ पर अटैक कर रहा है, जबकि यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, ये बीटा गामा एल्डिहाइड वो बनेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, और ये फोर्थ हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये भी पहले से सेकंड वाले से मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों पॉसिबल है। देखिए, द करेक्ट स्टैंडर्ड मैग्नीशियम हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 मैग्नीशियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है 6, और ये बनाता है इस टाइप का कंपाउंड। ये साहब एल्यूमिनियम 5 वैलेंस ऑर्बिटल, तो इसके में 9 ऑर्बिटल होती है, 3s की 8, 3p की 3 और 3d की 5, 1 3 5 तक टोटल हो गए 9। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। बोरॉन हैज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 4 होती है, bf 4 माइनस बना सकता है, जिसमें वैलेंसी इसकी 4 है, तो ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड सही है। और बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो बेरिल होता है 2s2, तो इसमें 2p की ऑर्बिटल भी खाली पड़ी हुई है, टोटल 1 प्लस 3 4 ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल थर्ड आंसर है इसका। फॉर्मूला ऑफ टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो इसमें यही ऑप्शन आपका सेकंड मैच कर रहा है, इससे अलावा कोई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पर पानी बाहर है और यहाँ पर भी पानी बाहर है, केवल ये मैच कर रहा है, इसमें वैलेंसी भी कोबाल्ट थर्ड की मैनेज हो रही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 81, और एन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम द मिक्सिंग पी एंड क्यू डेल्टा एच मिक्सिंग, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, रीजन एसोल्यूशन वाला, और रीजन नो इंटरेक्शन अकर्स, देखिए इंटरेक्शन नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, इसलिए इंटरेक्शन तो होता है, ठीक है सर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला जो इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो आंसर होगा इसका ए, बिना इंटरेक्शन सॉल्यूशन के समझ में आएगा। नेक्स्ट 82, देखिए पहले वाले केस में हमें मिलता है एनिलीन, सॉरी एमीन, बट इट इज बेंजाइल एनिलीन। दूसरे वाले केस में बनता है हमारा ये हॉफमैन ब्रोमोलाइट डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमोलाइट डिग्रेडेशन, और इसमें एनिलीन मिल जाता है हमें, ठीक है साहब। थर्ड वाले केस में ये रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि ये वीक एजेंट है, और फोर्थ वाले केस में इसकी होती है हाइड्रोलिसिस, तो इसमें एमीन बनता है प्लस CH3COOH बन जाएगा। तो इस वाले केस के हिसाब से बी एंड डी, ये केवल दो ही ऑप्शन है जो एमीन दे रहे हैं, एनिलीन दे रहे हैं, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ। अब आता है 83 क्वेश्चन, इसमें आंसर हमारा फोर्थ है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर +5 ऑक्सीजन स्टेट, एल्यूमिनियम की +3 है, और सल्फर की यहाँ पर -1 है। ये तीन ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी सब मैच के लिए कोई मैच नहीं पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से। 84, देखिए पहली रिएक्शन में
ये पहली स्टेप है AlCl3 के, दिस इज फील्ड का एसाइलेशन। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में। और इस पे जब NaOCl की रिएक्शन होगी, दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, बोलो तो यहाँ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ CH3CO क्लोरोफॉर्म रिएक्शन जो है, दिस इज टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग CH3CO ग्रुप, और वो ग्रुप हमारे यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बनता है ये C6H5 COONA और प्लस CHCl3। CHCl3 ये ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्चर के प्रेजेंस में बनाती है COCl2 पॉइजनस गैस फॉर जीन, सनलाइट प्लस एयर की प्रेजेंस में, ठीक है साहब। और ये जो है आपका COONA ये एसिड बना देगा हाइड्रोलिसिस के बाद। और if P gives a carboxylic acid on acidification, तो इसका एसिडिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पर H plus H2O will give you benzoic acid। इसमें हमारा आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट, P gives a carboxylic acid on acidification, Q gives a poisonous gas। तो P हो गया हमारा ये, दिस इज P एंड दिस इज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, चलिए इसको ड्राइव करते हैं। इसमें हो रहा है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि P एक्सटर्नल इक्वल टू 0, इसलिए W वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू 0। आइडियल गैस यदि वैक्यूम में आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है तो Q इक्वल टू 0 होता है। इफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन वैक्यूम आइसोथर्मली, तो वहां पर Q इक्वल टू हो जाता है 0। फिर आता है डेल्टा S, ये है सराउंडिंग के, निकालते हैं इसको हम। दिस इज इक्वल टू Q सराउंडिंग अपॉन T, और सराउंडिंग से हिट ली गई है 0, तो डेल्टा S सराउंडिंग इक्वल टू हो गई 0। फिर डेल्टा S सिस्टम देखते हैं, दिस इज NR ln V2 अपॉन V1, ठीक है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 है, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 मोल्स R इंटू ln 100 अपॉन 10, और दिस इज 2R ln 10। इसको लॉग टू का बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 2R इंटू 2.303 log 10 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.606 R। और योर आंसर इज सेकंड। ये कॉमा नहीं है, ये डॉट है। 4.606 R, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0। आता है क्वेश्चन नंबर 86। में हम आरएनए से क्वेश्चन लेते हैं, K इक्वल टू A जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT, ठीक है साहब। इसको लेते हैं ln K इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इंटरसेप्ट का काम करता है, इंटरसेप्ट हमारा 6 बैठता है, तो देखते हैं। और K की वैल्यू उन्होंने E स्क्वायर दे रखी है, तो दिस इज ln E स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस EA अपॉन RT, और ln E2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इक्वल टू 6 माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो EA अपॉन RT इक्वल टू का 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे EA की वैल्यू दे रखी है, वो है 6.64 किलोजूल या 6640 जूल, ठीक है। तो उसमें आप हम ले सकते हैं कि ये 6640 अपॉन 8.3 जूल होगी R की वैल्यू, इंटू T इक्वल टू 4, और T इक्वल टू होगा 6640 अपॉन 8.3 into 4, and this comes out to be 200 Kelvin।
तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। It's an weapon that consider the following statement about the solutions formed by mixing two liquids. An ideal solution thus formed always routes law through the composition range throughout. ये बिल्कुल सही है। Mixture of chloroform and acetone show negative deviation, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो जाता। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है, और दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। दे विल शो लेस इवेपोरेशन बोथ, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन। तो मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एनिलीन और फिनॉल दोनों ही क्या नाम पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ए एंड बी ओनली थर्ड। क्वेश्चन आता है 88, द हाईएस्ट ऑक्साइड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी टू इज, तो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर, जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, यहाँ पे ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा 1s2 से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर, धीमे धीमे पहुंचते पहुंचते यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2, तो ये लास्ट ऑर्बिटल ये फुली फिल्ड होती है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, तो इसके लिए हम यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटिव, या नॉट ले लेना इसको, नॉट दिया है तो माइनस ए रूट सी, ठीक है। इसमें जो ए है वो आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा, इसको बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, और स्लोप आएगा इसका माइनस ए, दिस इज गिवन माइनस 90, ठीक है। कंसंट्रेशन सी गिवन है 0.01 एम, और लेमडा एम की वैल्यू गिवन है 145.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इधर अब लेते हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो ये होगा लैम्डा एम, दिस इज 155, लैम्डा एम नॉट माइनस 90, और इसका जो रूट लेंगे 0.1 का, तो ये 0.01 आती है वैल्यू, सॉरी 0.01 सी दे रखी है, 0.01 वैल्यू उन्होंने, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस 90 इंटू 0.1, तो लैम्डा एम नॉट हो जाएगी इक्वल टू 145 प्लस 9, तो दिस इज 154। अब 154 में से अब ये देखिए लैम्डा एम जो नॉट होती है इक्वल टू स्मॉल लैम्डा एक्स प्लस प्लस स्मॉल लैम्डा वाई माइनस, तो उन्होंने एक्स प्लस की वैल्यू दे रखी है 74, तो दिस इज 154 इक्वल टू 74 प्लस 0 सॉरी प्लस लैम्डा वाई माइनस, तो लैम्डा वाई माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 80, तो आंसर इज थर्ड। नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन, among the following option the correct trend in the electron gain enthalpy, तो देखिए क्लोरीन की हाईएस्ट होती है 348, देन फ्लोरीन 333, देन ब्रोमीन 324, देन आयोडीन होती है 295। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही सही है इसका। तो बेटा लोग आप लोग अपना इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।